सुधागड एज्युकेशन सोसायटीचे पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय कळंबोली मराठी, हिंदी, इंग्रजी, उर्दू माध्यम यांच्या सौजन्याने शैक्षणिक व्हिडिओमध्ये आपलं सर्वांचं स्वागत आहे. नमस्ते विद्यार्थी मित्रांनो, आपण मागील 4 व्हिडिओमध्ये पेपर वन पार्ट 1 मॅथमॅटिकल लॉजिक चॅप्टर कंप्लीट केलेला आहे. आता आपण पेपर 2 कडे जाणार आहोत. स्टँडर्ड 12वी सायन्स न्यू सिलेबस, पार्ट 1 40 मार्क्स, पार्ट 2 40 मार्क्स अँड 20 मार्क्स प्रॅक्टिकल. पार्ट 1 मध्ये मागील व्हिडिओमध्ये आपण पार्ट 1 चा मॅथमॅटिकल लॉजिक चॅप्टर कंप्लीट झालेला आहे. आता आपण पेपर 2 कडे जाणार आहोत. पार्ट 2 मध्ये पहिला जो फर्स्ट चॅप्टर आहे डिफरेन्शिएशन, सेकंड चॅप्टर ॲप्लिकेशन ऑफ डेरिव्हेटिव्ह, थर्ड चॅप्टर इनडेफिनाइट इंटिग्रेशन, फोर्थ डेफिनाइट इंटिग्रेशन, chapter number 5 application of definite integration, 6 differential equation, 7 probability distribution and 8 number binomial distribution. टोटल पार्ट 2 के अंदर 8 चैप्टर 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 नंबर. आज आपण डिफरेंशिएशन चॅप्टर शिकणार आहोत. नेक्स्ट, डिफरेंशिएशन कंसिस्ट ऑफ टोटल सब पॉइंट 8 सब पॉइंट. फर्स्ट पॉइंट डेफिनेशन एंड सम स्टैंडर्ड फंक्शन related to the 11th science. Second point, derivatives of composite function. Second point, geometrical meaning of derivative. Fourth point, derivatives of inverse function. 5 number, logarithmic differentiation. 6 number, derivative of implicit function. And 7, derivatives of parametric function. And last point, higher order derivative. Differentiation consists of total sub point 8 number. Next, फर्स्ट आहे डिफरेन्शिएशन. थोडक्यात डिफरेन्शिएशन म्हणजे काय? डिफरेन्शिएशन मीन्स सपोज वी आर ट्रॅव्हल इन अ कार फ्रॉम मुंबई टू पुणा. समजा तुम्ही मुंबईपासून पुण्यापर्यंत गेलात तर टोटल डिस्टन्स विथ रिक्वायर्ड टाईम, जाताना तुम्हाला जेवढं डिस्टन्स तुम्ही कव्हर करणार तेवढ्याच डिस्टन्सला तेवढा टाईम तुम्हाला एक्स्ट्रा, जेवढं डिस्टन्स जास्त असेल तेवढा टाईम जास्त असेल. मीन्स सपोज वी आर ट्रॅव्हलिंग इन अ कार फ्रॉम मुंबई टू पुणा, द ॲव्हरेज स्पीड इक्वल टू ट्रॅव्हल डिवाइड टोटल टाइम टेकन टू ट्रॅव्हल दॅट डिस्टन्स. ॲव्हरेज स्पीड, टोटल डिस्टन्स ट्रॅव्हल अपॉन टाइम टेकन टू ट्रॅव्हल दॅट डिस्टन्स, we get the ratio. That is, it is a ratio of a very small distance travel with the small time interval required to travel that distance. Means increase the distance with respect to increase also time. Means total ratio is nearly equal to 0. The limit of this ratio means total distance travel divided by time taken to travel that distance, denoted by the ratio. The limit of this ratio as the limit interval tends to 0 is the speed of the car at that time. Means increase the time as well as increase the distance, means the total ratio is nearly equal to 0. In short, definition of differentiation: the rate of change in the function
function means f of x equal to total ratio function. The rate of change in the function at a point with respect to means distance change as well as time is also change with respect to the variable is called as the derivative of the function at that point. The process of finding the derivative at that point is called as the differentiation. Means total ratio is denoted by the differentiation. In short, the derivative of f of x with respect to x at x equal to a is given by f dash a. F dash a means derivative of f with respect to point is given x equal to a equal to limit h tends to 0 f of a plus h minus f of x upon h. Or suppose the derivative of f of x with respect to x equal to x means same point f dash x equal to limit h tends to 0 f of x plus h minus f of x upon h is also called as dy by dx. Means derivative is denoted by f dash a or f dash x or dy by dx. It is also the total f dash a equal to limit h tends to 0 f of a plus h minus f of x upon h. The total is called as the first principle or another name by definition of derivative. By the definition of derivative or first principle is called as f dash x equal to limit h tends to 0 f of x plus h minus f of x upon h is called as the first principle. Remember that. Next, derivative of some standard function. तुम्ही हे जे दिलेले स्टँडर्ड फंक्शन आहेत हे आपण 11th सायन्सला शिकलेलो आहोत. फर्स्ट आहे लेफ्ट साईडला फंक्शन आहे, राईट साईडला त्यांचे डेरिव्हेटिव्ह दिलेले आहेत. इकडे लेफ्ट साईडला फंक्शन्स आहेत, राईट साईडला त्यांचे डेरिव्हेटिव्ह्ज दिलेले आहेत. फॉर एक्झाम्पल, सपोज सी डिनोटेड बाय कॉन्स्टंट, derivative of c equal to 0. c means constant number, any constant number 5, 7, minus 9, 8, 10. The derivative of 5 number is equal to 0. Any constant number not related or attached to the variable for single term 5, 7, we get the derivative equal to 0. Next, x raised to n, x raised to n, ddx of x raised to n equal to n x raised to n minus 1. Total differentiation, use the next exercise. Second, derivative of some standard composite function. 12th सायन्स मध्ये पहिला जो चॅप्टर आहे हा डिफरन्सिएशन, याचा ॲक्च्युली सिलेबस स्टार्ट झालेला आहे. पहिला पॉईंट आहे डेरिव्हेटिव्ह ऑफ सम स्टँडर्ड कंपोजिट फंक्शन. Next, and rules of differentiation. Y equal to u plus v or u minus v equal to dy by dx equal to du upon dx plus or minus dv upon dx. Second, y equal to u into v. u into v means दो फंक्शन. सपोज y equal to sin x into cos x. दो फंक्शन रहेगा u and v. फर्स्ट फंक्शन u, सेकंड फंक्शन v, that is dy by dx equal to first function same derivative of second function plus second function derivative of first function. ये इंटरचेंज होगा तो भी चलेगा. नेक्स्ट, y equal to u upon v, मतलब y equal to सपोज sin x upon cos x, sin x equal to u फंक्शन, cos x equal to v फंक्शन. मतलब अपॉन में रहेगा y equal to u upon v, but v is not equal to 0, then we get the dy by dx equal to second function means upon function first du upon dx minus u dv upon dx divided by v square. v is not equal to 0. Using these before formulas and rules of differentiation,
to solve the first exercise. Next, derivative of some standard function. F dash x equal to limit h tends to 0 f of x plus h minus f of x upon h. It is called as the first function. It is called as the first principle or by the definition of derivative. आता ह्या फॉर्म्युल्याचा यूज कसा करायचा ते आपण बघणार आहोत. फॉर एक्झाम्पल बघा, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ a raised to x. a raised to x मीन्स एनी कांस्टेंट नंबर. 5 raised to x रहेगा, 7 raised to x रहेगा, 3 raised to x रहेगा, एनी नंबर. इन जनरल फंक्शन a raised to x with respect to x using the definition. Using the definition means using the first principle. F dash x equal to solution given f of x equal to a raised to x is given. F of x plus h means x equal to x plus h. x च्या जागेवरती फक्त x plus h सबस्टिट्यूट करायचा आहे, कारण आपल्याला इथे फॉर्म्युल्यामध्ये f of x दिलेला असतो. फक्त f of x plus h फाइंड करायचा आहे. x equal to only x plus h left side. Similarly, same change on right side, a raised to x plus h. We get the value of f of x and f of x plus h. Putting these values in this formula, given formula f dash x equal to limit h tends to 0, f of x plus h means a raised to x plus h, minus f of x means a raised to x upon h, equal to limit h tends to 0, a split किया है, a raised to x plus h equal to a raised to x, a raised to h, minus a raised to x upon h. Limit h tends to 0, upper side common number a raised to x, common लिखा है a raised to x, remaining number a raised to h minus 1, same divided by h, equals to a raised to x common, again limit h tends to 0, a raised to h minus 1 upon h. But in 11th science, limits use the formula limit x tends to 0, a raised to x minus 1 upon x equal to log a. याचा टोटल आन्सर log a येतं बघा. हा a कॉन्स्टंट नंबर आहे, a सेम येईल. युजिंग दिस नंबर बॅलन्स बिफोर नंबर मागे मागे हाँ x raised to x limit h tends to 0, a raised to h minus 1 upon h. This is same as equal to log a. Total answer a raised to x same. Remove the limit, we get the total answer equal to log a. Means derivative of a raised to x equal to a raised to x into log a. Second formula, standard formula d dx x raised to n equal to n x raised to n minus 1. Similarly, same formula यहाँ पे डी डी एक्स ऑफ एक्स का डेरिवेटिव 1 आता है, इसलिए लिखा नहीं, लेकिन आगे लिखा है डी डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू एन इक्वल टू एन एक्स रेज टू एन माइनस 1 डी डी एक्स ऑफ एक्स. ये दोनों फार्मूला नंबर 1, फार्मूला नंबर 2, फार्मूला नंबर 3 तीनों सेम है. डी डी एक्स ऑफ यहाँ पे खाली एक्स के जगह एफ ऑफ एक्स है, रेज टू नंबर सेम इक्वल टू एन f of x raised to n minus 1 into derivative of f of x, f dash x. Using this formula, solve the problem y equal to f of x equal to 3x minus 2 raised to 5. ये बैलेंस करो, 3y equal to f of x equal to 3x minus 2 raised to 5.
y equal to f of x equal to 3x minus 2 raised to 5. Y equal to f of x equal to 3x minus 2 raised to 5. Balance is the total bracket value denoted by f of x and upper term denoted by n. That is f of x equal to 3x minus 2 and n equal to 5. Use formula d dx of d dx of f of x raised to n equal to n f of x raised to n minus 1 into d dx of f of x. Using this formula to calculate the derivative of 3x minus 2 raised to 5. First, differentiating with respect to x. First, n equal to 5. Next, f of x, but f of x equal to 3x minus 2 raised to n minus 1. N minus 1 means 5 minus 1. Again, d dx of f of x means 3x minus 2. खाली फार्मूले के अंदर वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया है. एफ ऑफ ए एन का वैल्यू है, ए एफ ऑफ एक्स का वैल्यू है, रेस टू एन माइनस 1 है और डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स. कौन सा भी नंबर रहेगा एफ ऑफ एक्स का, तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3x माइनस 2 डी डी एक्स ऑफ 3x माइनस 2 इक्वल टू ए 5 नंबर सेम. नेक्स्ट है 3x माइनस 2, 5 माइनस 1 इक्वल टू 4. नेक्स्ट है डी डी एक्स ऑफ 3x माइनस डी डी एक्स ऑफ 2. सेपरेट डेरिवेटिव लिखा है, ये टर्म तो सेम आएगा. डी डी एक्स ऑफ 3x फर्स्ट, अगेन डी डी एक्स ऑफ 2 फर्स्ट इक्वल टू 5 इंटू 3x माइनस 2 फर्स्ट टर्म सेम लिखा है. डी डी एक्स ऑफ 3x 3 कॉमन, अगेन डी डी एक्स ऑफ x माइनस डी डी एक्स ऑफ 2 कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव 0 आता है. कौन सा भी सिंगल टर्म रहेगा, 2 रहेगा, 3 रहेगा, 9 रहेगा, माइनस 5, एनी नंबर सिंगल कांस्टेंट टर्म डेरिवेटिव इक्वल टू 0 इक्वल टू लास्ट स्टेप 3x माइनस 2 रेज टू 4, 3 सेम, डेरिवेटिव ऑफ x इक्वल टू 1, डेरिवेटिव ऑफ x इक्वल टू 1. फॉर एग्जाम्पल देखो d dx of x raised to 1. Calculate the derivative of x. d dx of x raised to 1 equal to 1. 1 means n equal to 1. x equal to n minus 1 means 1 minus 1. Again d dx of x equal to 1, x raised to 0, 1 minus 1. Again derivative of x is 1 equal to x raised to 0 equal to 1. Means derivative of x equal to 1 equals to last 5 into 3 15, 3x minus 2 raised to 4. We get the dy by dx. f of x equal to 3x minus 2 raised to 5. We get the total answer 15 3x minus 2 raised to 4. Using the formula x raised to n, f of x raised to n, any number, no problem. Next, derivatives of some standard composite function. Composite function means more than two functions combined to each other. For example, suppose f of x equal to sin x, we get single function. f of x equal to sin x, we get single function
then f dash x equal to d dx of sin x equal to derivative of sin x equal to cos x. It is denoted by single function, but f of x equal to sin 3x minus 2 is called as the composite function, not single function. It is denoted by composite function. Using derivative of some standard composite function, dy by dx equal to dy upon du into du upon dx. Next, exercise 1.1 depends upon composite function. Exercise 1.1 equal to question number 1 type number 1, क्वेश्चन नंबर 2 टाइप नंबर 2. मतलब एक्सरसाइज 1.1 टाइप वाइज सेपरेट किया है. मतलब आपको समझना आना चाहिए का कौन सा प्रॉब्लम कौन से टाइप के ऊपर है. तो फर्स्ट जो टाइप है, फर्स्ट टाइप इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स रेज टू एन इक्वल टू एन इंटू एफ ऑफ एक्स रेज टू एन माइनस 1 डी डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स. ये टाइप नंबर 1 मीन्स एक्सरसाइज 1.1 के अंदर जितना क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर ये सब टाइप नंबर 1 के अंदर आएगा. टाइप नंबर 1 मीन्स डी डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स रेज टू एन इक्वल टू एन इंटू एफ ऑफ एक्स रेज टू एन माइनस 1 डी डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स. Okay, start composite function. Composite function equal to dy upon dx. Composite function दो टाइप dy upon dx equal to dy upon du into du upon dx. कंपोजिट फंक्शन के अंदर दो फंक्शन रहता है. फर्स्ट है फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू u, second function with respect to x, or second d dx of f of x raised to n equal to n into f of x raised to n minus 1 into f dash x, a second function. Using these two formulas to calculate the derivative of y equal to f of x, y equal to f of x equal to x cube minus 2x minus 1 raised to 5, a composite function. F of x cube minus 2x minus 1 equal to f of x and n equal to 5. First है using first method and use second method. दोनों मेथड यूज किया है. दोनों मेथड ए साइड भी सॉल्व करता हूँ. फर्स्ट है y equal to f of x equal to first problem x cube minus 2x minus 1 raised to 5. First है method number 1 and method number 2. Method number 1 और ये method number 2. दो फार्मूला यूज करना. आप कौन सा भी फार्मूला यूज कर सकते, जो आपको इजी लगेगा वो सॉल्व करो. ठीक है. मेथड नंबर 1 dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू dy अपॉन डी यू इंटू डी यू अपॉन डी एक्स. सॉल्व द फर्स्ट मेथड. f of x equal to x cube minus 2x minus 1 raised to 5, bracket term denoted by u and n equal to 5. First है u equal to x cube minus 2x minus 1 denoted by
y equal to u raised to 5. Means the value of u equal to this number and raised to u equal to x cube minus 2x minus 1. First y equal to u raised to 5 means differentiating with respect to u, first function. Second function differentiating with respect to x. Differentiating with respect to u and differentiating with respect to x. First dy upon du. dy upon du means differentiating with respect to u equal to u raised to 5 means using the formula x raised to n. X raised to n means n f of x raised to n minus 1 equal to 5 u raised to 4. ये हुआ डिफ्रेंशिएटिंग dy अपॉन du का इक्वल्स टू 5 सेम u का वैल्यू एक्स क्यूब, हाँ u का वैल्यू यहाँ पे दिखाई एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 1 रेज टू 4. वी गेट द फर्स्ट वैल्यू dy अपॉन du. ये वैल्यू मिला है फर्स्ट. सेकंड डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x मीन्स du upon dx. Differentiating with respect to x, d dx of x cube minus 2 d dx of x minus d dx of 1 equal to x cube means using the formula x raised to n x raised to n minus 1, n equal to 3 x raised to 3 minus 1 minus 2 into derivative of x means 1 minus constant term का derivative 0 equals to 3 x raised to 2 minus 2. We get the value of du upon dx. ये वैल्यू मिला है देखो. फर्स्ट वैल्यू dy upon du equal to second value du upon dx equal to 1 2. Put 1 and 2 in star equation denoted by say suppose star equation. We get the final answer dy upon dx equal to first dy upon du equal to 5 x cube minus 2x minus 1 raised to 4 first. Second du upon dx equal to second into 3x square minus 2 means we get the total answer dy by dx equal to 5 x cube 5 3x square minus 2 into x cube minus 2x minus 1 raised to 4. ये हुआ आपका फर्स्ट मेथड. सिमिलरली सेम प्रॉब्लम मेथड नंबर 2. मेथड नंबर 2 f of x equal to x cube minus 2x minus 1 raised to 5. Solve the problem method number 2. Method number 2 means using this formula f of x raised to n wala. Total this is same as f of x raised to 5, that is f of x equal to bracket value x cube minus 2x minus 1 and n equal to 5. Differentiating with respect to x. ये लिखना इम्पॉर्टेंट है हर प्रॉब्लम के अंदर. डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x. फर्स्ट है दिस इज सेम एज y. डेरिवेटिव ऑफ y dy अपॉन dx इक्वल टू, देखो ये बैलेंस करो, n का वैल्यू कितना है 5 इनटू f ऑफ x का वैल्यू ब्रैकेट वैल्यू x क्यूब माइनस 2x माइनस 1 रेज टू
n minus 1. n minus 1 means 5 minus 1 into d dx of derivative of f of x. f of x equal to x cube minus 2x minus 1 equal to 5 x cube minus 2x minus 1, 5 minus 1 4 into d dx of first term x cube minus 2 constant d dx of x and last d dx of 1 equals to 5 x cube minus 2x minus 1 raised to 4. फर्स्ट टर्म सेम लिखा है, हर टर्म का डेरिवेटिव लिखना है. एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3 मीन्स n. अगेन x रेज टू n minus 1. n minus 1 means 3 minus 1 2 minus 2 into derivative of x 1 and constant टर्म का डेरिवेटिव 0 minus 1 का टर्म इक्वल टू 0 इक्वल्स टू 5 x cube minus 2x minus 1 raised to 4 3x square minus 2. We get the final answer dy by dx equal to, देखो दोनों भी आंसर सेम है. मेथड नंबर 1 यूज किया है, ये मेथड नंबर 2 यूज किया है. आप कौन सा भी मेथड यूज कर सकते हैं, जो आपको इजी लगेगा वो सॉल्व करो. ये इजी लगता है और जल्दी आंसर निकलता है. ठीक है. नेक्स्ट सेकंड प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व किया है. देखो ये फर्स्ट मेथड है, ये फर्स्ट मेथड, ये सेकंड मेथड है. फर्स्ट मेथड का आंसर 5 इंटू 3x स्क्वायर माइनस 2 एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 1 रेज टू 4. सेम 5 इंटू एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 4 3x स्क्वायर माइनस 2. ये दोनों आंसर सेम है. मेथड 1 मेथड 2, आपको जो लगेगा वो नंबर आप सॉल्व करो. ठीक है. हाँ, टाइप नंबर 1 के अंदर प्रॉब्लम नंबर 3 प्रॉब्लम नंबर 4 आता है. मतलब एक्सरसाइज 1.1 के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 जो टाइप 1 है, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4. हाँ, आप ये नेक्स्ट पीरियड में देखेंगे अभी. ठीक है. ओके.